Assalamu alaikum students. So today is our third class of business writing and presentation skills. In last class we had discussion on basic grammar and spelling rules and some other general discussion. So today we will start a very new topic which is punctuation and then we will move forward to sentences type and sentences structure. So I think first we have to understand what the punctuation actually is. Punctuation से related concepts और आपने activities और practice इससे पहले भी बहुत मर्तबा की होगी. But business writing में हम इसको किस तरह से incorporate करते हैं और किस तरह से इन different symbols का, marks का या spacing पे किस तरह से use करते हैं, इसको आज हम detail में discuss करेंगे. So first, let's start with what the punctuation actually is. So punctuation is basically is the uses of spacing and marks, symbols, conventional sign, and certain typographical devices जो हमें help out करते हैं तो कि हम different sentences को correctly read कर सकें. Like अगर हम पंक्चुएशन मार्क्स को या स्पेसिंग को करेक्टली अपने सेंटेंसेस में इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे सो इट कैन इवन चेंज द मीनिंग ऑफ योर सेंटेंस और योर पैराग्राफ. सो punctuation is very important and powerful in business writing. It's one of the most important part of English language. The clearest business writing always uses simple communication marks because it will help the reader to navigate through the most the text more easily. So आज हम discuss करेंगे कि किस तरह से हम punctuation marks include करेंगे in business writing. So there are various types of punctuation marks. Like first we will start with a capital letter. So we always use capital letter at the initial as an initial capital letter before noun or pronoun or the name of the people like Professor Chandra and before the abbreviation. Like जब भी आप कोई भी abbreviation use करेंगे in your writing तो आप उसको हमेशा capital letter में राइट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे BBSUL हम एब्रिविएशन यूज करते हैं बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी बिहार की जगह, तो हम उसको हमेशा कैपिटल लेटर में राइट करते हैं. इसी तरह वी यूज इनिशियल कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस. सो अनदर पंक्चुएशन मार्क इज द पीरियड. वी ऑलवेज यूज पीरियड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और ये इंडिकेट करता है ये मार्क पंक्चुएशन मार्क कि आपने अपने सेंटेंस को यहाँ पे एंड कर दिया और दिस इंडिविजुअल सेंटेंस कन्वेड द कंप्लीट मीनिंग. तो ऑलवेज यूज पीरियड जहाँ पे आप अपना सेंटेंस एंड कर रहे हैं सो दैट द रीडर विल अंडरस्टैंड कि आपने यहाँ पे अपनी बात को कंप्लीट कर दिया. Then comma, we use comma between words in a list. Like when we have multiple words in a sentence or multiple words to convey. So we always use comma between the words. Like she thanked her auditors, her parents, and Oprah Winfrey. Okay? So because we have multiple words in a sentence, इसीलिए हम उसको divide करेंगे या separate करेंगे with the help of comma. So अगर आप सपोज कि अगर आप इस सेंटेंस में कॉमा यूज नहीं करते तो रीडर इसको करेक्टली रीड नहीं कर सकता था. हो सकता था कि वो इस सेंटेंस को wrongly इंटरप्रेट करे. सो whenever you have multiple words in a sentence आप हमेशा उसको सेपरेट करेंगे with the help of comma. और कौन से सिचुएशंस में कॉमा यूज हो सकते हैं? लाइक when we have extra information. For example, when we use correctly commas, it will help to improve your writing as well. It also improve the reader ability to understand your thoughts. जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अगर आप पंक्चुएशन मार्क्स को प्रॉपरली यूज करेंगे तो वो आपकी ना सिर्फ राइटिंग को स्मूथ करेगा, आपकी राइटिंग को अट्रैक्टिव करेगा, बट ऑन द अदर हैंड रीडर की एबिलिटी को भी इन्हेंस करेगा कि वो आपने जो राइट किया है उसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर सके और आपका जो ऑब्जेक्टिव है या पर्पस ऑफ राइटिंग है उसको क्लियरली जो फीडबैक है वो प्रोवाइड कर सके.
So commas are also used when we have additional important information within a sentence. For example, George, who taught accounting for 30 years, delivered the keynote presentation. So यहाँ पर हमारे पास important information क्या थी जो हमने sentence में include की, who taught accounting for 30 years. So इस important information को highlight करने के लिए या separate करने के लिए we use commas. But on the other hand, no commas are needed if the information is necessary. जो फर्स्ट हमने सिचुएशन डिस्कस की वो ये थी कि अगर हमें कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कन्वे करनी हो विद इन अ सेंटेंस तो हम उसको कॉमा के थ्रू सेपरेट करके शेयर करेंगे. बट अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जिसको डिलीवर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम रीडर को कन्वे करना चाह रहे हैं, देन उसको फिर हम कॉमा से separate नहीं करेंगे. For example, the book that John borrowed is back on your bookshelf. So this was the important information that the book that John borrowed. So इसको हमने separate नहीं किया with the help of comma. But in first situation में who taught accounting for 30 years was important information but additional information. So इस केस में हमने उसको separate कर दिया with the help of comma. Another question, another punctuation mark is question mark. So we always add question mark at the end of the sentence, which is interrogative. Whenever you use or whenever you write any sentence जिसकी nature interrogative हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा important है कि आप उसके end में question mark include करें. If you don't include question mark, तो वह आपकी क्वेश्चन की नेचर को चेंज कर देगा. फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड यू कैलकुलेट द टोटल सेल्स लॉस? इट्स अ क्वेश्चन. तो अगर आप इसके एंड में क्वेश्चन मार्क इंक्लूड नहीं करेंगे, इट मीन्स दैट यू डोंट नीड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. सो क्वेश्चन मार्क हम क्यों इंक्लूड करते हैं? क्योंकि हमें किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर रिक्वायर्ड होता है. बट अगर आप क्वेश्चन मार्क इंक्लूड नहीं करेंगे, then the reader will not supposed to give any answer. So always include question mark if you are writing any interrogative sentence. ठीक है? Like how did you calculate the total sales loss? You required the answer of this question कि उसने किस तरह से sales loss को calculate किया, किस तरह से sales growth को calculate किया. तो आपके लिए important है कि आप उसको question mark के through highlight करें. Another punctuation mark is exclamation mark. Exclamation mark we usually use जब हमें अपनी feelings या emotions को express करना होता है, but usually it's not generally common in business writing में. हम इसका जो इसका use है वो बहुत ज़्यादा limited. Like I won $4 lakh, so it's quite unusual. So exclamation mark हम usually use नहीं करते. Another most important punctuation mark is the apostrophe. इससे पहले भी हमारी जो 2 क्लासेस थी उसमें हमने apostrophe किसी ना किसी सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया. So apostrophe हम किन सिचुएशन में यूज करते हैं? जब हमें ओनरशिप एक्सप्रेस करनी है. So हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हमें सिंगल ओनरशिप या पोजेशन डिलीवर करनी है या कन्वे करनी है तो हम apostrophe हमेशा एस से पहले ऐड करेंगे. ठीक है. प्लीज लुक एट द कर्सर. अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट हो या हम सिंगुलर पोजीशन शो कर रहे हो तो हम हमेशा एपोस्ट्रोफ एस से पहले इंक्लूड करेंगे. और अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट इंक्लूड कर रहे हैं या मल्टीपल ओनरशिप कन्वे कर रहे हैं तो हम हमेशा एपोस्ट्रोफ एस के बाद इंक्लूड करेंगे. एंड एपोस्ट्रोफ आर वेरी कॉमनली यूज्ड इन बिजनेस राइटिंग. सो अगर आप सिंगल ओनर को शो कर रहे हैं तो एपोस्ट्रोफ आप एस से पहले इंक्लूड करेंगे और अगर मल्टीपल ओनर को शो कर रहे हैं देन एपोस्ट्रोफ बाद में यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टारबक्स एंड स्टारबक्स. अगर हमने स्टारबक्स कस्टमर में एस से पहले एपोस्ट्रोफ यूज किया है, इट मीन्स कि हम सिंगल स्टारबक्स कस्टमर की बात करें. और अगर हमने एपोस्ट्रोफ एस के बाद यूज किया है, इट मीन्स कि हम
जो कंप्लीट स्टारबक्स की कस्टमर बेस है उसके बारे में बात करें. बट don't use an apostrophe when you are making a word plural. If you remember, जब हम स्पेलिंग रूल्स डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम कोई भी सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो ई और ई एस को ऐड करते हैं. बट डोंट कंफ्यूज apostrophe with plural word or plural sentence. ठीक है, इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम सिंगुलर और प्लूरल. एपोस्ट्रोफ का साइन क्या है कि हम उसको लाइक एक छोटा सा कॉमा जो है वो एस के अपवर्ड जो है वो इंक्लूड करते हैं और इट इंडिकेट्स द एपोस्ट्रोफ साइन. So don't get confused with the plural subject or plural verb or with apostrophe. Hyphen, another punctuation mark is hyphen. सो हाइफिन हम कब यूज करते हैं जब हम दो वर्ड्स को कंबाइन करते हैं. यूजुअली उन दो वर्ड्स में से एक वर्ड हमारा नाउन होता है और सेकेंड वर्ड एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल वेल डन स्टे, 3 year सप्लाई, पार्ट टाइम वर्क, डबल स्पेस डॉक्यूमेंट. ठीक है, सो वेन एवर वी हैव टू कंबाइन टू वर्ड वी यूज हाइफिन या हाइफिन का साइन है. इट्स नॉट डैश, इट्स अ हाइफिन साइन. Another punctuation mark is colon. So when we use colon before a list of points, इससे पहले हमने कॉमा डिस्कस किया था और हमने उसकी रिक्विजिट डिस्कस की थी कि whenever we have multiple words in a sentence. So whenever we have multiple points in a sentence, then we use a colon. For example, I have 3 favorite hobbies. It means that we have multiple points or 3 points to write or to convey: reading, writing, and auditing. रीडिंग, राइटिंग एंड ऑडिटिंग के बिटवीन तो हमने कॉमा यूज किया है, बट उससे पहले जब हम ये इंप्रेशन दे रहे थे या हम ये कन्वे कर रहे थे कि हमारे पास मल्टीपल पॉइंट्स है, देन हमने वहां पे कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज किया है? कॉलन. ठीक है. एंड अदर यूज ऑफ कॉलन इज दैट व्हेन वी हैव टू एम्फेसाइज एनी पॉइंट. जब हमें किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना हो या एम्फेसाइज करना हो तो हम कॉलन यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कंक्लूजन में या डिस्कशन पार्ट में यूजुअली कॉलन यूज किया जाता है या कॉलन का पंक्चुएशन मार्क यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल आफ्टर रीडिंग द ब्रीफ वी केम टू आवर कंक्लूजन. ठीक है, इट मीन्स दैट यू आर डिस्कसिंग एनी इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट नीड the attention of reader. The potential benefits outweigh the initial cost. So, colon हमने discuss किया when we have multiple points in a sentence or when we show emphasize, then we use colon mark. Semicolon, we use semicolon when we have to join two most closely linked sentences. जब सेमिकोलन का साइन हम यूजुअली बिजनेस राइटिंग में उन सिचुएशन में यूज करते हैं जब हमें दो बहुत कॉमनली या ज्वाइंटली जो सेंटेंसेस होते हैं या एक दूसरे के साथ जो बहुत ज़्यादा ज्वाइंटली लिंक्ड होते हैं उनको कंबाइन करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स स्टडी टू फुलफिल पर्सनल गोल्स. ईच इंडिविजुअल गोल मे बी डिफरेंट. Like the first sentence is closely related to the second sentence. That's why we use a semicolon between these two sentences. इसके साथ साथ अगर आपने रिसर्च का कोर्स पढ़ा है तो आपको पता होगा कि रेफरेंसेस जब भी हम इंक्लूड करते हैं विद इन द टेक्स्ट एंड इफ वी हैव मल्टीपल ऑथर्स और इफ वी हैव मल्टीपल स्टडीज टू रेफरेंस विद इन द टेक्स्ट, तो हम उन रेफरेंसेस को सेमीकोलन के थ्रू आपस में कंबाइन करते हैं या ज्वाइन करते हैं. सो द पर्पस वाज दैट कि सेमीकोलन हम कब यूज करेंगे? जब हम दो क्लोजली लिंक्ड सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे या कंबाइन करेंगे. Another important punctuation mark is quotation mark. So quotation mark हम कब यूज करेंगे? To refer a very specific phrase.
जब हमें किसी भी सेंटेंस को, किसी फ्रेज को हाईलाइट करना हो, देन हम कोटेशन मार्क यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एट द कंपनी वी रेफर टू दिस मेथड एज द हैंड्स ऑन अप्रोच. सो हैंड्स ऑन अप्रोच, या अगर आप कोई इम्पोर्टेंट प्रोसेस आपको डिस्क्राइब करना है, किसी की इंपॉर्टेंट क्वालिटी डिस्क्राइब करनी है, या कोई स्पेसिफिक फेस डिस्क्राइब करना है, या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आप चाहते हैं कि उसको हाईलाइट करें, फॉर दैट यू विल यूज कोटेशन मार्क. Or to cite specific information from the person outside, like the professor asked where is Jessica. ठीक है? So if you have to highlight important information, then you will use quotation mark. Another punctuation mark is the bracket. We always use bracket to add information to quoted material. For example, I graduated from the University of Illinois in urban campaign with a master degree in accounting. So in that, आपने देखा कि हमारे पास जो कोडेड मटेरियल है, लाइक हमने कोटेशन मार्क भी इसमें यूज किया है. सो अगर हमें कोटेशन मार्क में कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी हो, देन वी विल यूज ब्रैकेट्स. And other punctuation mark is the parenthesis. We use parenthesis to add information that is not necessary to a statement, but it will clarify the sentence or the contrast. Like parenthesis हम उन सिचुएशन में यूज करेंगे जो हमारे सेंटेंसेस, हमारे सेंटेंस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट अगर हम उसको इंक्लूड करेंगे विद इन अ सेंटेंस, तो वो हमारे सेंटेंस को और ज़्यादा क्लियर करेंगी और रीडर उसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकेंगे. For example, I was very happy yesterday to see a new movie based on my favorite book. So it was not necessary कि हम मूवी का नाम यहाँ पे इंक्लूड कर दे, बट अगर हम मूवी का नाम इंक्लूड कर रहे हैं तो रीडर उसको क्लियरली अंडरस्टैंड करेगा कि वो किस बुक की बात कर रहे हैं और कौन सी फेवरेट बुक है जिसको पिक्चराइज किया है इन मूवी. डैशेस, we use dashes to make a bold or sometimes unexpected statements. जब भी हम कोई ऐसे सेंटेंसेस में या अपनी राइटिंग में कोई ऐसा पॉइंट इंक्लूड करते हैं जो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है या अनयूजुअल है, तो उसको राइट करने के लिए या डिलीवर करने के लिए हम डैशेस यूज करते हैं. लाइक देन जॉर्ज द क्वाइट इज द अनएक्सपेक्टेड स्टेटमेंट. Conservative accountant who always followed every rule, embezzled millions of dollars and ran away to Italy. ठीक है, so ये जो information है, like embezzled millions of dollars, decoyed, they are the bold statements or they are the unexpected statements. ठीक है, so for that case we use dashes. Another rule related to punctuation mark, like जब भी हम quotation mark यूज करते हैं और quotation mark से related अगर हमें quotation mark जब हम यूज कर रहे हैं और फिर हमें उसके साथ punctuation के symbols या spacing यूज करनी हो, हम उसको किस तरह से अरेंज करेंगे, किस तरह से स्ट्रक्चर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, punctuation mark है हमारे पास period, and if we have quotation mark as well. So in that case, we always use period inside the quotation mark. For example, she said, "You owe me money." तो यहाँ हमने quotation mark यूज किया है. So अगर quotation mark के साथ हमें period यूज करना हो, then हम उसको हमेशा inside the quotation mark यूज करेंगे. ऐसा नहीं है कि हम quotation mark के बाद period यूज करें, बल्कि हम quotation mark से पहले period का punctuation mark include करेंगे. Another is the comma. Same is the case with period. We always insert comma inside the quotation mark. Here you can see the comma. The comma mark is hidden inside the quotation mark. Another is the question mark. So question mark में हमारे पास दो situation है. We place question mark inside if it is a part of the quote. Like अगर question mark आपके quotation mark के साथ attached है या उसका part है, then हम उसको
कोटेशन मार्क के इनसाइड यूज करोगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन मार्क आपके सेंटेंस का पार्ट है बट आपके कोटेशन का पार्ट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, शी आस्क्ड डिड यू रीड द अकाउंटिंग बुक आई गेव यू। सो इन दिस केस द क्वेश्चन मार्क इज द पार्ट ऑफ द कोटेशन, इसीलिए हमने उसको इंक्लूड किया विद इन द कोटेशन मार्क। बट सेकेंड सेंटेंस में देखें, डिड शी आस्क यू इफ यू रीड राइटिंग फॉर अकाउंटेंट्स। So, in this case, the question mark is the part of the sentence and not part of the quotation mark. So, in that case, we will insert question mark outside the quotation mark. आपको ये identify करना है either question mark आपके sentence का part है या आपकी quotation का part है। अगर quotation का part है तो आप inside insert करेंगे और अगर sentence का part है तो आप outside insert करेंगे। सेम इज द केस विद एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क कोटेशन का पार्ट है देन आप उसको इनसाइड द कोटेशन मार्क इंसर्ट करेंगे, और अगर एक्सक्लेमेशन मार्क सेंटेंस का पार्ट है तो आप आउटसाइड द कोटेशन मार्क इंक्लूड करेंगे। सेमीकोलन, हमेशा सेमीकोलन हम कोटेशन मार्क के आउटसाइड इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई रीड अकाउंटिंग फॉर डमीज, it was very helpful. Here you can see a semicolon is placed outside the quotation mark. Same is the case for colon. We always insert colon outside of the quotation mark. Like, I learned 2 lessons from the real world. Work hard but enjoy life. So here you can see that we use colon outside the quotation mark. Another punctuation mark with quotation mark consideration is footnote. We always insert footnote outside after the sentences and punctuation. Footnotes का ज़्यादातर यूज होता है जब हम रेफरेंसिंग कर रहे होते हैं, लाइक शिकागो रेफरेंसिंग में हम फुटनोट्स यूज करते हैं। सो लाइक एमएस वर्ड में आपके पास एक ऑप्शन होता है फुटनोट्स इंसर्ट करने का, जिसमें आप किसी भी वर्ड पे अगर फुटनोट इंसर्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन या उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आप पेज के एंड में वहाँ पे क्लियरली आपके पास एक ऑप्शन आता है जहाँ आप उसको प्लेस कर सकते हैं। सो फुटनोट्स के ये साइन होते हैं, लाइक इट्स न्यूमेरिक साइन 1 2 3 4। सो whenever we use footnotes तो हम उसको हमेशा प्लेस करेंगे आउटसाइड द कोटेशन मार्क। So these were some of the punctuation mark and their uses. अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बट आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट इन द ग्रुप, सो आप इसको रीड कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और कुछ मैं इसी तरह से एक्टिविटीज ग्रुप में शेयर करूंगी जिसमें आपके पास एक कंटेंट होगा या पैसेज होगा जो विदाउट पंक्चुएशन होगा। सो आपको वहाँ पे सूटेबल पंक्चुएशन इंसर्ट करनी होगी। तो इस तरह की प्रैक्टिस से आपकी जो पंक्चुएशन स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगे, क्योंकि बिजनेस राइटिंग में पंक्चुएशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और यहाँ हमने लाइक ऑब्जर्व किया कि अगर हम पंक्चुएशन मार्क करेक्टली यूज नहीं करते तो इवन वो आपके सेंटेंसेस की मीनिंग को मॉडिफाई कर सकती हैं, चेंज कर सकती हैं, और समटाइम अगर हम रॉन्ग पंक्चुएशन मार्क यूज करते हैं तो वो आपकी रीडिंग एबिलिटी को या आपके रीडर की रीडिंग एबिलिटी को डिक्रीज कर सकती है। सो इफ यू वांट टू बिकम एन इफेक्टिव राइटर, उसके लिए आपकी स्पेलिंग और ग्रामर स्किल के साथ साथ पंक्चुएशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बिकॉज इन बिजनेस राइटिंग वी ऑलवेज यूज सिंपल पंक्चुएशन। लाइक अभी बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स ऐसे थे जो हमने डिस्कस नहीं किए। क्यों डिस्कस नहीं किया? क्योंकि बिजनेस राइटिंग में वो इतना कॉमनली यूज नहीं होते। आज हमने जितने भी पंक्चुएशन मार्क यूज किए हैं यूजुअली वो बहुत कॉमन है और बिजनेस राइटिंग में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। सो यू शुड नो हाउ टू यूज दिस पंक्चुएशन मार्क एंड इट विल कंट्रीब्यूट टू क्लैरिफाई योर राइटिंग। आपकी राइटिंग को ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और क्लियर कर देंगे एंड यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट what you are mean to communicate.
So let's move towards sentence structure. Like we discuss spelling skills, we discuss grammar skills. So it's a time to write something that will bring desired outcome. Because आपकी जो business writing है वो सिर्फ punctuation skills तक या grammar skills तक लिमिटेड नहीं है। अब हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंसेस कि किस तरह से हम सेंटेंस को स्ट्रक्चर करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, और किस तरह से हम अफेक्टिव सेंटेंसेस राइट कर सकते हैं। सेंटेंसेस के बाद हम पैराग्राफ की तरफ मूव करेंगे और देन प्रॉपरली हम स्टार्ट करेंगे कि बिजनेस राइटिंग में कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म्स हैं और हम उसको किस तरह से राइट करेंगे। सो इफ यू रिमेंबर, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था what is a sentence? Sentence is basically the combination of different words that convey the complete thought or complete idea. For example, अगर मैं different words को combine कर दूं, so it won't be a sentence. Sentence must have a subject and a predicate. So it will be able to convey the required idea or the thought or any information to the reader. तो आपके सब्जेक्ट में जो उस सब्जेक्ट के जो मस्ट हैव इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डोंट यूज इनकम्प्लीट सेंटेंस इन बिजनेस राइटिंग। लाइक स्पोकन इंग्लिश में तो हम थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को या फ्रेगमेंट सेंटेंसेस को, बट in business writing you must always have to write complete sentence जो एक complete meaning कन्वे करे। बिकॉज बिजनेस राइटिंग में सिर्फ आप अपनी सेल्फ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते बल्कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते। सो डोंट यूज इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। योर सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। These are the must-have ingredients of a complete sentence. So what is the subject? Subject is basically the center of attention. It can be anything, it can be any person, or it can be any place. And what is predicate? Predicate is the combination of verb and object. ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में जो बहुत डिटेल में डिस्कस किया। सो सेंटेंसेस जब तक आपके कंप्लीट नहीं होंगे, you will not be able to convey what is the purpose of your writing. So your sentences should be very complete and you should have must select the appropriate subject and predicate. Like जरूरी नहीं है कि सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आप inappropriate verb या inappropriate subject को चूज करें। For effective sentence structure, you have to include the exact or accurate subject and accurate verb and object. So there are different types of sentences जिसको हम डिस्कस करेंगे और इन्हीं sentences को combine करके हम paragraph organize करेंगे. Like hold me a second. My laptop is stopped working. Okay. Give me a second, students. I think there is some problem with my laptop. Let me give me a setting ताकि मैं इसको दोबारा से ओपन करूँ।
So we were talking about sentences कि किस तरह से हम effective sentences write कर लेते हैं. So इससे पहले हमने क्लास में भी कुछ एक्टिविटीज की थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से आप ऑनलाइन क्विजेस अटेंड करके अपनी स्पेलिंग स्किल्स को या ग्रामर स्किल्स को enhance कर सकते हैं. So it's working. Yes. So simple sentence. So what are simple sentences? Simple sentences are those sentences जिसमें आपके पास एक subject और एक predicate होता है. ठीक है? These are one of the simplest sentence जिसमें आपके पास multiple subject या multiple predicate नहीं होते. For example, we went to St. John yesterday. It's a simple sentence और इसकी structuring किस तरह से की है? Like we went to St. John. We is the simple subject, went is the verb, and St. John is the object or prepositional phrase. Prepositional phrase in the sense कि यहाँ हमने एक preposition use की है which is to. So the combination of verb and prepositional phrase is called complete predicate. So it is the simplest sentence because it has one simple subject and one predicate. So what is the simple sentence जिसमें हमारे पास एक predicate और एक subject होगा. And the simple sentence is a complete sentence. Another type of sentence is the compound sentence. So in compound sentence we have So in compound sentence, we have more than one part, or we can say that in compound sentence, we have more than one subject or more than one predicate, or it is the combination of simple sentences. ठीक है? So compound sentences की multiple definitions हो सकती हैं. Like compound sentences वो sentences होते हैं जिसमें हमारे पास multiple subjects and predicate होते हैं, या compound sentences कॉम्बिनेशन होता है सिंपल सेंटेंसेस का. बट एक और कैरेक्टरिस्टिक है कंपाउंड सेंटेंस की, वो ये है कि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज इंक्लूड होगा. सो व्हाट इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज? Like independent clause are those sentences or those clauses that can stand itself as a simple sentence. Like independent clause are the कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है और वो एक कंप्लीट थॉट को कन्वे करता है. जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि कंपाउंड सेंटेंसेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स और सिंपल सेंटेंस. तो उसमें एक पार्ट इट वुड बी इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक सेंटेंस उस पे इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा. और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें आपके पास एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है और वो एक कंप्लीट मीनिंग को या एक कंप्लीट आइडिया को कन्वे कर रहे हैं. चूंकि कंपाउंड सेंटेंसेस में हमारे पास मल्टीपल सेंटेंस होते हैं या मल्टीपल पार्ट्स होता है, सो उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना इम्पॉर्टेंट है. तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम किस तरह से कंबाइन करते हैं या लिंक करते हैं विद अदर पार्ट्स? वी कंबाइन और लिंक independent clause with other part of the sentence with the help of coordinating conjunction, with the help of conjunctive, with the help of adverb, or with the help of semicolon. Like coordinating conjunctions are those words जिसको हम linking words भी कहते हैं, जो different independent clause को आपस में link करते हैं ताकि एक flow create हो सके आपकी writing में. इसी तरह adverbs वो वर्ड्स होते हैं जो आपके वर्ब को मॉडिफाई कर रहे होते हैं या आपके वर्ब को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं. इसी तरह सेमीकलन, हमने सेमीकलन का क्या फंक्शन अभी डिस्कस किया कि सेमीकलन का पंक्चुएशन मार्क हम उन सिचुएशन में यूज करेंगे जब हमारे पास दो ऐसे सेंटेंसेस हों या दो ऐसे पार्ट हों जो आपस में क्लोजली लिंक्ड. सो रिवाइज करते हैं इसको अगेन. कंपाउंड सेंटेंसेस में हमारे पास मल्टीपल सिंपल सेंटेंसेस होते हैं. जब हमारे पास मल्टीपल सिंपल सेंटेंसेस होंगे तो इट मीन्स कि वी हैव मोर देन वन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. बट another characteristic of compound sentence is that we must have one independent clause in the sentence. So अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल,
We went to St. John and most of us read all night. So here you can see that we have two parts in this compound sentence. First part is we went to St. John and the second part is most of us read all night. So यहाँ हमने एक और नोटिस किया, एक और बात नोटिस की कि हमने दोनों सेंटेंसेस को, ये दोनों पार्ट्स को किस तरह से लिंक किया है विद द हेल्प ऑफ conjunction word. And what is the conjunction word? It is and. So let's see कि हमने इस सेंटेंस को स्ट्रक्चर किस तरह से किया. So in this sentence, we went to St. John is an independent clause. Independent clause किस तरह से हमने इसको आइडेंटिफाई किया? Because इसमें एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है. सिर्फ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का होना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज एक कंप्लीट मीनिंग को कन्वे कर रहा हो या एक कंप्लीट थॉट को कन्वे कर रहा हो और उसमें फिर कोई कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल, वी वेंट टू सेंट जॉन इज ए कंप्लीट सेंटेंस जो आपको एक कंप्लीट बात कन्वे कर रहा है, दैट वी वेंट टू सेंट जॉन yesterday or the day before yesterday. The other sentence is, and most of us read all night. And is the coordinated conjunction जिसने दोनों sentences को आपस में combine किया है. Most of us is the subject, read is the verb, all night is the modifying phrase. ठीक है. So अगर आप ये देखें कि इन दोनों parts में या इन दोनों simple sentences में हमारे पास सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इंक्लूड है, बट इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है? फर्स्ट सेंटेंस, बिकॉज इस सेंटेंस में एक कंप्लीट मीनिंग है जो कन्वे कर रहा है टुवर्ड्स द रीडर. सो इन कंपाउंड सेंटेंस वी हैव मल्टीपल पार्ट्स एंड वी हैव independent clause. For example, another example of compound sentence: my parents caught a severe cold. Consequently, they had to cancel their vacation. So, आप स्टूडेंट्स प्लीज आप मुझे आइडेंटिफाई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि इस कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है. सो इंडिपेंडेंट क्लॉज is the first part, like my parents caught a severe cold. Consequently is conjunction adverb जिसने इन दोनों sentences ये part को combine किया है. They had to cancel their vacation. They had to cancel their vacation is the second part of the sentence, and it's not an independent clause because it's not conveying the complete meaning until and unless it is conjuncted with the independent clause. Another example is that some people like basketball. सेमीकोलन. अच्छा, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन या कंजंक्टिव एडवर्ब यूज करें. समटाइम हम डिफरेंट पार्ट्स को कंबाइन करने के लिए सेमीकोलन भी यूज करते हैं. जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ सेमीकोलन के थ्रू इन दोनों पार्ट्स को कंबाइन किया है, बट इंसर्टिंग कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन और कंजंक्टिव एडवर्ब, इससे आपकी सेंटेंस की कॉम्प्रिहेंशन इंक्रीज हो जाएगी. For example, some people like basketball. In this compound sentence, some people like basketball is an independent clause and others prefer baseball is the remaining part of the sentence. Another sentence type is the complex sentence. So in complex sentence, we have at least two parts. Okay? One that can stand alone and another one that cannot. Compound sentence में हमने क्या डिस्कस किया था? That it is the combination of simple sentences or multiple forms. But complex sentence में और compound sentence में difference क्या है कि complex sentence में हमारे पास independent clause के साथ साथ एक dependent clause भी है. कंपाउंड सेंटेंस में तो हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था और उसके साथ एक सिंपल सेंटेंस था, बट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में we will have one independent clause and one dependent clause. So what is dependent clause? Independent clause को हमने डिस्कस किया that it has one subject and one predicate and it conveys the complete meaning to the reader.
बट इंडिपेंडेंट क्लॉज आर दोज क्लॉजेस जिसमें आपके पास सब्जेक्ट भी इंक्लूड होता है एंड प्रेडिकेट भी इंक्लूड होता है, बट वो एक कंप्लीट थॉट या एक कंप्लीट आइडिया को कन्वे नहीं कर रहे होते। लाइक जब तक आप उसको ज्वाइंट नहीं करते या लिंक नहीं करते विद इंडिपेंडेंट क्लॉज, it will not give the reader the complete thought or the complete idea. Like independent clause तो separately भी कोई ना कोई meaning convey कर रहे होते हैं, but dependent clause कोई भी thoughtful meaning deliver नहीं कर रहे होते। For example, since my sister and I wanted to have fun, we went to St. John yesterday. तो आइडेंटिफाई करके बताएं कि इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है एंड डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। So the last one is the independent clause. We went to St. John yesterday because अगर हम इस सेंटेंस को फर्स्ट सेंटेंस से सेपरेट भी कर देंगे तो भी ये कंप्लीट मीनिंग रीडर को कन्वे कर रहा है। बट सिंस माई सिस्टर एंड आई वांटेड टू हैव फन, it is independent clause, dependent clause, ठीक है, because it not can stand alone and it not convey the complete meaning to the reader. So let's see कि हमने इस sentence को किस तरह से structure किया है। Since we wanted to have fun is the part of the sentence that cannot be standalone. It means that it is a dependent clause. And we combine and link dependent and independent clause with the help of subordinated conjunction. Subordinating conjunction are those conjunction or those words जिनके थ्रू हम independent और dependent clause को combine करते हैं. For example, after, although, because, before, even though, as long as much as. These all are the example of subordinating conjunction. So the second part of the sentence is the we went to St. John yesterday. So it is the independent clause. So when we have independent and dependent clause in the sentence, it will become a complex sentence. And what is the difference between complex sentence and compound sentence? Compound sentences में आपके पास independent clause तो होते हैं but dependent clause नहीं होते। बट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज भी मौजूद होते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज भी होते हैं। लाइक इट्स अनदर एग्जांपल, व्हेन द केक इज ब्राउन, टेक इट टू द oven. The first part of the sentence is the dependent clause and the second part of the sentence is the independent clause, and we bifurcate or we join these two sentences with the help of comma. ठीक है, यूजुअली आपके हो सकता है कि मैं आपके एग्जाम में भी आपको कुछ इस तरह से सेंटेंसेस दूं कि इसमें आपको आइडेंटिफाई करना हो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन से हैं या डिपेंडेंट क्लॉज कौन से हैं और प्रेडिकेट कहाँ है या सब्जेक्ट कहाँ है और आपको आइडेंटिफाई करना हो। सो फॉर योर कन्वीनियंस यूजुअली जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो सेंटेंस के बिगिनिंग में इंक्लूड होता है, ठीक है, और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। Compound complex sentence. Another type of the sentence is the compound complex sentence. So what are compound complex sentences? A compound complex sentence is comprised of at least two independent clauses and one or more dependent clause. It means कि compound complex sentences में हमारे पास एक से ज्यादा independent clause होंगे. Dependent clause can be one or more than one, but independent clause must be more than one. So let's see any example of compound complex sentence. For example, it is a fragmented sentence or separated sentence जिसमें आपके पास different independent clause हैं और dependent clause हैं। Independent clause को मैंने highlight किया है with yellow color और dependent clause को highlight किया है with blue color. So as we discussed, कि dependent clause usually हम sentence के beginning में insert करते हैं. So here you can clearly understand the baby slept and dreamed.
is an independent clause because it has subject and a predicate और ये एक complete meaning को convey कर रहा है. Like अगर हम इसको इन sentences या इन parts से separate भी कर दें तो ये complete meaning convey कर रहा है to the reader. But while the rain fell, it's इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी है प्रेडिकेट भी है बट ये कोई कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस नहीं करा. तो हम किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं इन सेंटेंसेस को. While the rain fell, the baby slept and dreamed and the mother washed. ठीक है. So in this sentence we have more than one independent clause and one dependent clause. अगर इस सेंटेंस में हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता. और अगर इस सेंटेंस में हमारे पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लॉज है इट मींस दैट इट इज अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. Another example of compound complex sentence, since we wanted to have fun, is a dependent clause. My sister and I went to St. John yesterday and we enjoyed all night. My sister and I went to St. John yesterday is first independent clause and we enjoyed all day is the second independent clause. So let's see how this sentence is structured. Since is a subordinating conjunction. We wanted to have fun is the part of the sentence that cannot be standalone. It means that it is a dependent clause. My sister and I is a subject. Went to St. John is a predicate and we enjoyed all day. It's another independent clause जिसको हमने combine किया है या link किया है with the help of coordinating conjunction and this coordinating conjunction is and. ठीक है. हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को जिस कंजंक्शन से लिंक करेंगे उसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं. ठीक है. और इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम जिस कंजंक्शन से लिंक करेंगे या ज्वाइन करेंगे दैट विल बी कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सो दैट्स वाज ऑल अबाउट सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज सेंटेंस, what are the different types of sentence and what is simple sentence, what is compound sentence and what are compound complex sentences और किस तरह से हम इसको structure कर सकते हैं. what are subordinating conjunction, what are coordinating conjunction. हमने इसके बारे में different examples के थ्रू इसको learn किया. so I will share these slides with you as well. सो आप उसको अच्छी तरह से गो थ्रू करें, इसकी प्रैक्टिस करें. इसी से रिलेटेड मैं डिफरेंट क्विज क्लास में और आपकी ग्रुप में शेयर करूंगी जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि डिफरेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन से हैं और डिफरेंट डिपेंडेंट क्लॉज कौन से हैं और किस तरह से आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के थ्रू उसको लिंक कर सकते हैं. सो इट वाज ऑल अबाउट सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग. Now you would have an idea कि किस तरह से आपको sentence write करना है. Because business writing is not only limited to simple sentence. आपने आज तक कोई ऐसा content read नहीं किया होता जिसमें सिर्फ simple sentences use करें. Business writing is composed of multiple types of sentences और हम different sentences को compose करके paragraph डिजाइन करता है या ऑर्गेनाइज करता है. बट राइटिंग समथिंग इज नॉट अ बिग टास्क. ऑलवेज रिमेंबर, राइटिंग समथिंग इज नॉट अ बिग टास्क. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू राइट समथिंग दैट कुड बी रीड. आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, बहुत सारी राइटिंग्स होती है बट वो आपके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप नहीं करते या जो उसका डिजायर्ड रिस्पॉन्स है वो जनरेट नहीं करती. जिस तरह से हम अगर मीडिया कम्युनिकेशन की बात करें सो आप रोजाना टेलीविजन पे डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट होता है और डिफरेंट जब हम एडवर्टाइजमेंट की बॉडी कॉपी राइट करते हैं या स्लोगन्स राइट करते हैं तो कुछ स्लोगन्स आपके माइंड में हमेशा रह जाते हैं. क्यों रह जाते हैं? क्योंकि उसको उन्होंने इतना इफेक्टिवली राइट किया होता है कि हमारे वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं और जब भी हम
शॉपिंग वगैरह जाते हैं या हम सुपरमार्केट में जाते हैं, तो हम अनकॉन्शियसली उन प्रोडक्ट्स को फाइंड करते हैं जिनके हमारे माइंड में एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं. Same is the case, like, yes, it is the type of business writing. It is the writing between the organization and the customer. Same is the case, for example, if you are writing a proposal, ठीक है, to the head of your company, कि आपको एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च करना है, एक न्यू कैंपेन मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आपने किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड डिजाइन किया. फॉर दैट यू हैव टू राइट अ प्रपोजल कि उस स्पेसिफिक कैंपेन के आपकी ऑर्गेनाइजेशन को या आपके प्रोडक्ट लाइन को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. सो यू वुड हैव टू राइट समथिंग कि वो आपके जो अपर मैनेजमेंट है उसको परसुएट कर सके या उसको इन्फ्लुएंस कर सके कि वो डिजायर्ड रिस्पॉन्स जनरेट करें. और आपका डिजायर्ड रिस्पॉन्स क्या है कि वो आपको अप्रूवल दे दें टू कंडक्ट दिस प्रोजेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हम जब फाइनेंशियल ग्रांट्स के लिए डिफरेंट प्रपोजल राइट करते हैं तो हमारा उसका पर्पस क्या होता है कि हम किसी तरह उस फाइनेंशियल ग्रांट को अचीव कर लें. सो राइटिंग समथिंग इज नॉट अ बिग टास्क. आपको इस तरह से अपनी राइटिंग को ऑर्गेनाइज करना है या स्ट्रक्चर करना है कि वो एक डिजायर्ड रिस्पॉन्स जनरेट कर सके. फॉर एग्जाम्पल, जो सेल्स लेटर होते हैं उनका पर्पस क्या होता है कि कस्टमर उनकी प्रोडक्ट को कंसिडर करे और उनको परचेज करे. बट अगर आपके सेल्स लेटर अफेक्टिवली रिटन नहीं है, सो कस्टमर उसको रीड तो जरूर कर लेगा बट वो आपको फीडबैक शो नहीं करेगा. ये जो आपका पर्पस था कि आपके प्रोडक्ट को परचेज करे वो फुलफिल नहीं होगा. सो अब हम ये अंडरस्टैंड करेंगे या लर्न करेंगे कि हम अफेक्टिव सेंटेंसेस किस तरह से राइट कर सकते हैं. इससे पहले जो स्लाइड्स थी हमने उसमें ये डिस्कस किया कि हम सेंटेंस को स्ट्रक्चर किस तरह से करेंगे या हम कंप्लीट सेंटेंसेस किस तरह से राइट कर सकते हैं. बट अब हम ये प्रैक्टिस करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे कि हम अफेक्टिव सेंटेंसेस को किस तरह से राइट कर सकते हैं जो हमारे जो राइटिंग पर्पस है उसको फुलफिल कर सके. So there are four cornerstones of writing clear sentences. Writing clear sentences. Always remember कि अगर रीडर आपकी राइटिंग को क्लियरली रीड नहीं कर सकेगा तो आपकी जो राइटिंग है वो बिल्कुल यूजलेस होगी या कोई भी उसका उसका कोई आउटकम नहीं होगा या उसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होगी. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी राइट करें वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो. लाइक हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कंसाइजनेस इज नॉट द गोल बट यू शुड हैव राइट समथिंग दैट इज क्लियर एंड कंसाइज. क्लियरिटी के साथ साथ कंसाइजनेस भी होनी चाहिए. सो व्हाट आर द फोर कॉर्नरस्टोन्स ऑफ राइटिंग क्लियर सेंटेंसेस or writing effective sentences? For example, the first one is write a clear subject and a clear predicate. As we discussed, writing a complete sentence is not a big task. आपको कोई appropriate subject choose करना है, appropriate predicate select करना है ताकि वो आपके sentence को complete होने के साथ साथ effective भी कर सके. On the other hand, place modifiers close to what is being modified. It's very very important. If you remember, हमने modifiers discuss किए थे, adverb and adjective discuss किए थे. So these modifiers are very important because वो आपकी writing को specific कर देते हैं, उसकी comprehension को increase करते हैं और उसको बहुत ज़्यादा clear कर देते हैं. So whenever you use any noun or any verb that is complex or that is difficult or that require further modification or description, so always use modifiers in the sentence ताकि reader उसको clearly understand कर सकें. Use appropriate punctuation. It's very important. If you are not using appropriate punctuation, the reader will not read your writing correctly. So use appropriate punctuation because जैसे अभी हमने डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स के डिफरेंट फंक्शंस को डिस्कस किया कि वो कौन क्या मीनिंग कन्वे करते हैं. स्पेशली इन बिजनेस राइटिंग यूजिंग अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने कोई क्वेश्चन मार्क सेंटेंस का और उसमें क्वेश्चन मार्क इंक्लूड नहीं किया
आपने किसी कोई कोटेशन मार्क कहीं इंक्लूड नहीं किया टू एम्फेसाइज योर पॉइंट, आपने सेमीकोलन यूज नहीं किया टू ज्वाइन टू मोस्ट रिलेटेड सेंटेंसेस. सो दीज आर, अभी आपको ये बहुत ज्यादा सिंपल मिस्टेक्स लग रही है, बट समटाइम्स दे कॉस्ट यू अनबेयरेबल. लाइक मैं एक केस स्टडी आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगी कि किस तरह से एक पंक्चुएशन मार्क की वजह से उन्होंने एक प्रोजेक्ट, कंप्लीट प्रोजेक्ट एक कंपनी ने लूज कर दिया. I will share that case study in the group. Another cornerstone is make sure that the meaning can be clearly understood. So how can you ensure that the meaning is clearly understood? Whenever you write any sentence, you must make sure that it is concise, it is clear, it is concrete, it is understandable, and it is right with a clear consideration and with clear tone. Like हमने tones discuss की थी. We have formal tone, we have natural tone. So must write in appropriate tone and visualize your reader. Whenever you write something, आप सबसे पहले अपने रीडर को विजुअलाइज करें कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी जेंडर क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी नॉलेज क्या है, वो और आपसे वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे वो इंफॉर्मेशन कन्वे करें जो ऑलरेडी मुझे मालूम है, तो आपकी राइटिंग का कोई फायदा नहीं होगा. बट आई रिक्वायर दोज इंफॉर्मेशन जो मुझे नहीं मालूम. ठीक है. सो फर्स्ट यू हैव टू विजुअलाइज योर रीडर कि आपके रीडर की क्या आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या रिक्वायरमेंट है. सो उसको आप अपने माइंड में रख के अपनी राइटिंग को प्लान करें. Another is use the appropriate conjunction. Conjunctions are very very important because it will, you know, इट्स स्मूथ लिंक बिटवीन योर आइडियाज. जब भी कोई आप आइडिया शेयर करते हैं या थॉट्स शेयर करते हैं, ये उसमें फ्लुएंसी या स्मूथनेस क्रिएट करती हैं एंड इट विल हेल्प यू टू राइट लॉन्गर सेंटेंसेस विदाउट साउंड ऑकवर्ड. जब आपको लॉन्गर सेंटेंसेस राइट करने होते हैं या वर्डी सेंटेंसेस राइट करने होते हैं, इन दैट टाइम मस्ट यूज कंजंक्शन, क्योंकि ये आपके सेंटेंसेस को ऑकवर्ड नहीं करता, बल्कि उसको एक स्मूथ फ्लो में और एक राइटिंग फ्लो में उसको लेके चलता है. सो कंजंक्शन हेल्प यू टू राइट क्लियर सेंटेंसेस बाय कनेक्टिंग वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स. So we have different types of conjunctions. Coordinating conjunctions are and, but, or there are various other types of coordinating conjunctions. Subordinating conjunctions, जो अभी हमने डिस्कस किया था, we use subordinating conjunctions to link independent and dependent clause, like as, because, if, since, until. आप इंटरनेट पे भी सर्च कीजिएगा, आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स मिलेंगी फॉर coordinating conjunctions and subordinating conjunctions. Conjunctive adverb, accordingly, however. So इस तरह के conjunctions आपकी राइटिंग को स्मूथ करते हैं और आपकी राइटिंग में एक फ्लुएंसी क्रिएट करता है. Okay, we have multiple example for conjunction, but before that, I think I should have to open this slides again. Let me open it. Give me a second. My laptop is not properly working today, so apologies for this. Yes, we have multiple examples for coordinating conjunction and subordinating conjunction. Like the first sentence is, Mary traveled to Florida, but she couldn't visit Disney World. Mary traveled to Florida because she had an important business meeting. Mary traveled to Florida to meet some business people. So what is common in these three sentences? The first part of the sentence is common in these three sentences. और उसके बाद उन्होंने conjunction words use किए हैं to describe another sentence. Like the first is the
coordinating conjunction. The second one is the subordinating conjunction, and the third one is the conjunction adverb. So आइडेंटिफाई और लाइक असेस कि अगर हम इन कंजंक्टिव वर्ड्स को यहाँ से रिमूव कर देंगे, सो डू यू थिंक कि ये वर्ड्स अभी भी वही अंडरस्टैंडिंग कन्वे कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल, मैरी ट्रेवल टू फ्लोरिडा, शी कुडंट विजिट डिज्नी वर्ल्ड। सो बट इंक्लूड करने से इस सेंटेंस की क्लैरिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है? बाय एडिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस पूरे सेंटेंस की क्लैरिटी इंक्रीज हो गई या अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस सेंटेंस से कंजंक्शन वर्ड रिमूव कर दें, फॉर एग्जाम्पल, मैरी ट्रेवल टू फ्लोरिडा, शी हैड एन इम्पॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग। ये कंजंक्शन वर्ड डिस्क्राइब करा है कि वी आर डिस्कसिंग द रीजन बिकॉज शी हैड एन इम्पॉर्टेंट बिजनेस meeting. So always use appropriate conjunctive words when you are connecting multiple sentences. Here, Mary traveled to Florida to meet some business people. She had to return to Puerto Rico before the meeting. So, however, adding however increase the comprehension of the sentence. So, always use appropriate conjunction when linking multiple sentences or by linking or when you have to write longer sentences. Things to avoid, like when you are writing an effective sentence, what are the things that you should avoid? The first one is the wordiness. Always remember that business executives are very busy. They don't have time to go through wordy document or unnecessary repetition. So always concise your writing, whether it is academic writing or whether it is business writing. Like the first sentence is, the lack of responsibility of John made him fail the class. It's a wordy sentence versus John failed the class because of his responsibility. It means the lack are the wordy words in this sentence. और अगर हम इसको रिमूव कर देंगे तो आपकी ये सेंटेंस को और ज़्यादा कंसाइज कर देगा. Or we can use the sentence that John's lack of responsibility made him fail the class. So it is the word that composed of it is the sentence that composed of minimum words. If you remember कि हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जितने आपके सेंटेंसेस में वर्ड्स कम होंगे उतने आपके सेंटेंसेस की कम्प्रिहेंशन ज़्यादा होगी. फॉर एग्जांपल, अगर आपके सेंटेंस में 8 वर्ड्स हैं तो उसकी कम्प्रिहेंशन 100% होती है. इसी तरह अगर आपके सेंटेंस में 15 वर्ड्स हैं तो उसकी कम्प्रिहेंशन 90%. और जिस तरह आप अपना वर्ड काउंट इंक्रीज करेंगे आपकी सेंटेंस की कम्प्रिहेंशन उतनी डिक्रीज हो जाएगी. Don't use unnecessary phrases like students in the present time have to work to pay for college. In the present time is the unnecessary phrase जिसको आप remove कर सकते हैं in your sentence. Like you can use a single word describing the whole phrase. In the present time, you can use the word today. Today, students have to work to pay for college. So don't use unnecessary phrases. And if you feel that your writing is become lengthy, so identify कि आपने कहीं unnecessary phrases तो use नहीं किए या कोई ऐसे word तो use नहीं किए जो आपके sentences को bore कर रहे हैं या complex कर रहे हैं. Eliminate unnecessary words and phrases like the movie was kind of disturbing. You don't need to include kind of in your sentence. You can simply state the movie was disturbing. Avoid saying the same thing twice. Avoid redundancy. कभी भी, especially in business writing, academic writing में या आपकी जो personal writing होती है या जो fiction writing है, literature writing है, उसमें तो हम इन things को या इन situations को bear कर लेते हैं, but business writing में that express the same thing. The computer is a new innovation.
Innovation is always new. So there is no need to include new in the sentence. The computer is an innovation is a perfect sentence. Another, yes, here we end with the sentence structuring or how can we write an effective sentence. But always remember that the business writing is not only limited to writing independent sentences. We have to write a factor paragraph to generate desired response. So how can we write a factive paragraph? आज हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे और इसकी जो कंप्लीट डिस्कशन होगी वो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे कि हम किस तरह से पैराग्राफ को effective paragraph write कर सकते हैं जो reader को एक complete meaning convey करे. So the diagram that you are seeing in this slide is called inverted pyramid. So usually we compose paragraph or we design paragraph on this simple formula. Like you can say it's a simple and easy to remember formula जिसके through आप अपनी writing को organize कर सकते हैं. So what the inverted pyramid actually is? Inverted pyramid are like आपने देखा होगा it's like a funnel कि हम पहले किसको कंसाइज करेंगे और किस तरह से हम अपनी राइटिंग को कंपोज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन अ पैराग्राफ इफ यू रिमेम्बर हमने डिस्कस किया था कि द एवरेज लेंथ ऑफ अ पैराग्राफ composed of 200 words or 3 to 5 sentences. So किस तरह से हमें उसको ऑर्गेनाइज करना है. लाइक हमने सेंटेंसेस के को तो डिस्कस कर लिया कि हमें वर्डिनेस अवॉइड करनी है, हमें कंजंक्शंस इंक्लूड करनी है, हमें फ्रेजेस को रिपीट नहीं करना. बट पैराग्राफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेंटेंसेस. तो उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है. So always remember, usually this pyramid is used in argumentative writing or descriptive writing. बट उसके साथ साथ हम इसको सेल्स में या रिपोर्ट राइटिंग में या मीडिया राइटिंग में इस pyramid को largely use करते हैं. So what the pyramid actually says, whenever we are organizing anything, first we have to introduce what is the purpose of our writing. Like we can follow the lead concept कि हम what explain करें अपनी writing का, where explain करें अपनी writing का, then explain करें और clearly बताएं कि आपकी writing का purpose क्या है या आपका topic क्या है, उसको clearly introduce करें ताकि रीडर के माइंड में अगर कोई कंफ्यूजन है या इफ ही वांटेड टू नो कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, आप उसको क्लियरली एट द बिगिनिंग ऑफ योर राइटिंग और द बिगिनिंग ऑफ योर पैराग्राफ उसको कन्वे करें कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर ओवरऑल राइटिंग. आफ्टर दैट यू विल इंक्लूड डिटेल्स और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन. लाइक फर्स्ट आपने deliver kiya to what is the purpose of your writing. In the second paragraph or in the second part of the paragraph you will include important information and important facts. Like first आप वो information discuss करेंगे जो बहुत ज़्यादा important है और उसके बाद आप वो information या additional information और details include करेंगे so जो आपके important points को support कर सके. At the end, at the conclusion section, you will include the summary of all important points or all important paragraphs. For example, if your writing is consist of multiple paragraphs, then in the last paragraph, you will give the complete summary or the complete description of the most important point. सो हमने इसको बहुत ज़्यादा ब्रीफली डिस्कस किया. इन नेक्स्ट क्लास जब हम प्रॉपर राइटिंग स्टार्ट करेंगे बिकॉज like kind of sentences, similarly sentences, business writing is not composed of a single paragraph. So it is composed of multiple paragraph, multiple content. So किस तरह से उस content को हमें organize करना है. But this formula or this inverted pyramid is always useful. Like not only in business writing but in academic writing as well. कि आप सबसे पहले अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करें, उसके बाद इंपॉर्टेंट डिटेल्स इंक्लूड करें एंड इन द एंड इन द कंक्लूजन जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको एक समराइज वे में रीडर को दोबारा से उसका एक रिमाइंडर दें दैट आपने अपने ओवरऑल राइटिंग में क्या डिलीवर किया है या क्या इंक्लूड किया है. लाइक एक बहुत ज़्यादा कॉमन कोड है
tell them what you are going to tell them, then tell them, then tell them what you have told them. ठीक है? First क्या था? Tell them what you are going to tell them. Like introduce your point. Then tell them. Tell them means that deliver your important point. Then tell them what you have told them. It means कि आपने जो उनको डिलीवर किया, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, उसको आप रिमाइंड करें या उसको आप रिवाइज करें ताकि उनके माइंड में वो इंफॉर्मेशन रिफ्रेश रहे. So I think we should sum up our lecture here, and I will share all the lecture slides and all the supporting material in the group. So whoever watched this lecture or watching this lecture, please comment your name and class ID in the comment section, so that I would know कि कितने students ने इस lecture को attend कर लिया है, and it will be easy for me to mark your attendance. आप मैंने जो ऑनलाइन क्विज आपको असाइन किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उनके अपने स्कोर कार्ड शेयर कर दिए हैं. जिन स्टूडेंट्स ने शेयर नहीं किए, यू हैव द डेडलाइन बाय टुमारो. कल तक आप शेयर कर दें क्लास में. और जो आज की क्लास है, जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, उससे रिलेटेड जो असाइनमेंट है वो मैं क्लास में शेयर कर दूंगी, और आपको उससे रिलेटेड अगर कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू.